again. So far, we have seen one-dimension motion and motion in the straight line. Now we are switching on to the next chapter called motion in a plane. Chapter number 4 है. We can call it two-dimension motion because we need the two coordinates x and y, or y or z, or z or x. The two coordinates, we will be requiring any two coordinates to show the motion in a plane. Motion in a plane is, example is circular motion is one of the examples. Projectile is the other example. Projectile we are going to do in this detail now itself. So therefore, can you give just in day-to-day life, just let us take the example. One dimension motion means ball thrown up, vertically up. Okay? So that is one dimension motion. And ball thrown at some angle, ऐसे angle पे फेंका हमने. It will go like this and come to the ground. इसमें x coordinate and y coordinate, two coordinates are needed to represent this motion. है ना? या फिर insect, कोई insect है moving on the floor, है ना? कोई insect floor पे move कर रहा है, तो two dimension motion are involved. If bird is flying in air, that is three dimension motion. It can go, it can move, it can go along any of the axes. Aeroplane flying is three dimension, bird flying is three dimension motion, because aeroplane will no longer be in one plane. Take off करने के बाद turn भी करता है वो, है ना? Rocket fired at some one angle, maybe two dimension motion, है ना? But अगर suppose fish in the water is three dimension का आपने नहीं, just example भी I am taking the example only. Insect crawling on the floor is two dimension motion. Day-to-day life के example ले रहे हैं. But bird flying in the air, fish in the water is three dimension motion. Ball thrown up, vertically goes up, coming down is one dimension motion. Person walking in the narrow lane is one dimension motion. Motion in the straight line में आएगा. So you should be able to distinguish, है ना? Two dimension motion क्या है, one dimension. I think in this chapter we have the many examples. So we'll see one dimension motion, two dimension motion, three dimension motion. I have given you sufficient example, but our focus will be on these two major topics. Projectile क्या है? किसी object को project कर दो, and it is projectile moving under the effect of gravity. Ball को angle पे फेंक दो. Football kicked in air, javelin thrown. ये सब two dimension motion. They are all projectile. Javelin thrown in the air, two dimension motion. Ball thrown in air at some angle is two dimension motion. Shot put, ये सब जो भी sports में यहाँ पे normal, you take any object and throw it at some angle. That as long as it is in air, it is called projectile. You have projected it. Moving under the effect of gravity alone is called projectile. So we will focus on this, coming to this topic directly. Main topic पे आ रहे. Other points I will tell you later. इससे related point है. Other questions we can do it two dimension के बाद में. So many examples are given, so many questions. But let us move on to the projectile motion. Very important. So उससे पहले just tell me one thing. एक क्वेश्चन पूछता हूँ वेक्टर का आपसे. ये वेक्टर है A, making angle theta with the horizontal direction. तो इसका vertical component, I mean horizontal component क्या आएगा? A cos theta आएगा, और ये वाला component A sin theta आएगा. But we are interested in horizontal component, A cos theta. Do you remember or not? ये वेक्टर A है, और ये horizontal direction है, इसके साथ एंगल is yes. Cos theta की प्रॉपर्टी लगाओ ना. Cos theta is adjacent, इसको ये ax बोलते हैं ना. एक मिनट. Cos theta is horizontal component upon hypotenuse. So ax is A cos theta. That's what I have written here. Now you tell me if angle becomes 90 degree. अगर ये एंगल थीटा 90 हो जाए,
तो वेक्टर कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ए विल कम हियर, एंगल थीटा विल बी 90 डिग्री। तो ax विल बी हाउ मच, होरिजेंटल कंपोनेंट विल बी व्हाट, जीरो हो जाएगा ना। इफ a becomes vertical, its horizontal component ax will become zero, because you see here ax is equal to a cos 90 0. So 90 degree per, on 90 degree, at 90 degree component will be zero. So that's what is happening here in this whole topic. Acceleration किधर है, डाउनवर्ड। जब हम ऑब्जेक्ट को एयर में थ्रो कर देते हैं एट सम एंगल और वर्टिकल, इन बोथ केसेस acceleration is downward, but that is equal to minus 9.8 meter per second. If we take downward direction negative, तो minus a is equal to minus g, ठीक है। तो a is equal to minus g हो गया, और ये क्या होगा, a वर्टिकल y एक्सिस के अलावा, इसका x कंपोनेंट कितना होगा, जीरो। 90 डिग्री पर एक्सेलेरेशन का कंपोनेंट विल बी जीरो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नो एक्सेलेरेशन एट ऑल, ऑब्जेक्ट थ्रोन in air will have zero acceleration in horizontal direction, because all the acceleration is vertically downward. पूरा acceleration ay है, that is equal to minus g, its ax is zero. अगर आप ऑब्जेक्ट को एयर में फेंकते हैं तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलेरेशन नहीं होता, एक्सेलेरेशन का कंपोनेंट जीरो होता है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का जो मोशन है, दैट इज अनएक्सेलरेटेड मोशन, विदाउट एक्सेलरेटेड मोशन। तो दिस पॉइंट वाज नोटिस बाय गैलीलियो फर्स्ट। सबसे पहले गैलीलियो ने नोटिस किया था कि अगर he first stated that projectile is the combination of two separate components of the motion, both are independent of each other, है ना। उसने दो कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया, और एक में एक्सेलेरेशन फुल रहेगा नीचे, हॉरिजॉन्टल में नहीं रहेगा, हॉरिजॉन्टल में एक्सेलेरेशन नहीं रहेगा। दैट्स हाउ ही डेल्ट विद द projectile. The projectile is the object that is in the flight at
Yeah. Can you hear me now? Yes. Yes. Just a minute. Let me bring back the screen. Yeah. देखें. See. Let me explain again. Projectile motion is the object that is in the flight after being projected, for example, football or cricket ball or javelin throw, shot put, etc. Galileo was the first who stated that projectile is a combination of two separate components of motion. Both are independent to each other. Both are independent to each other. X component of motion will not hamper to the Y component. Y component will not affect the X component of motion. और x कंपोनेंट ऑफ द मोशन विल बी विदाउट एक्सेलेरेशन. x ax 0 है क्योंकि पूरा का एक्सेलेरेशन इज वर्टिकली डाउनवर्ड. तो वर्टिकल डायरेक्शन का जो मोशन होगा दैट विल बी अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी 9.8 डाउनवर्ड, और x डायरेक्शन का मोशन विल बी कांस्टेंट यूनिफॉर्म वेलोसिटी रहेगी उसमें, बिकॉज एक्सेलेरेशन है ही नहीं. तो टू इंडिपेंडेंट मोशंस, वन डायमेंशन मोशन, बोथ आर नॉट अफेक्टिंग ईच अदर. ठीक है. तो नाउ सपोज u with the initial velocity with this p project, theta is the angle of projection with the horizontal. तो इसका जो ये कंपोनेंट रहेगा horizontal component u cos theta, vertical component will be u sin theta, and acceleration ay vertical direction में acceleration क्या रहेगा g minus j cap, अगर हमने यूनिट वेक्टर यूज किया, अदरवाइज माइनस जी सिंपली लेंगे, और ax will be 0. x डायरेक्शन में एक्सलेशन का कोई भी कंपोनेंट नहीं है. ठीक है. तो यहाँ पे हमने ये सेम पॉइंट लिखे हैं u थीटा, ए वाई इज माइनस जी, डाउनवर्ड डायरेक्शन हम माइनस लेंगे यहाँ पर भी. ए एक्स इज 0, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज u cos थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट इज u sin थीटा. ux component remains constant. There is no, why it is constant? Since there is no acceleration in horizontal direction, no component of acceleration at all in horizontal direction. तो ये वेलोसिटी इसका मतलब क्या है, u cos theta is not going to change at all, क्योंकि इसमें कोई ना तो कोई एक्सेलेरेशन इधर है ना अपोजिट है. तो दिस no acceleration is going, since acceleration is not there, तो horizontal component of velocity will be constant. तो प्रोजेक्टाइल अगर सपोज यहाँ पर पहुंच गया, इसका होरिजेंटल कंपोनेंट u cos थीटा, यहाँ भी u cos थीटा रहने वाला है. वर्टिकल कंपोनेंट विल डिक्रीज बिकॉज ये इनिशियली u sin थीटा था, एक्सेलेरेशन इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो वर्टिकल कंपोनेंट छोटा होता चला जाएगा. हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल कंपोनेंट विल बी स्मॉलेस्ट, 0 ही हो जाएगा. होरिजेंटल कंपोनेंट इज नॉट गोइंग टू चेंज. यहाँ पर पहुंच गया तभी भी u cos थीटा होरिजेंटल कंपोनेंट ये वाला, वर्टिकल कंपोनेंट विल बिकम शॉर्टर एंड शॉर्टर एंड शॉर्टर, छोटा होता चला जाएगा ये, बिकॉज एक्सेलेरेशन इज रिटार्डिंग इट. एक्सेलेरेशन नीचे की तरफ है और ये वेलोसिटी ऊपर की तरफ है. तो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू सी. दिस इज क्लियर, ये पॉइंट क्लियर होगा. horizontal component of initial velocity, vertical component of initial velocity, and accelerations. And these are treated as two independent motion. Along x-axis का one dimension, along y-axis का one dimension motion. जो पीछे हमने one dimension motion use किए ना, v is equal to u plus at. vertical direction में use करेंगे हम उसको ऐसे, vy uy ay. होरिजेंटल में तो कुछ हो ही नहीं रहा है डायरेक्शन, आई मीन एक्सेलेरेशन है ही नहीं, तो उसके लिए जरूरत नहीं है. काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशंस विल नॉट बी यूज्ड देयर, एक्सेलेरेशन इज 0. और ऐसे ही सेकंड इक्वेशन को यूज करना है वर्टिकल डायरेक्शन में, तो यहाँ पे y लिखेंगे, ये भी y, ये भी y कंपोनेंट लेंगे सारे, बिकॉज दैट इज एक्सेलरेटेड मोशन. तो इस तरह से हम यूज करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन जो हमने प्रीवियस चैप्टर में सीखा है वर्टिकल डायरेक्शन में मोस्टली. तो दिस पॉइंट इज इंट्रोडक्शन पार्ट. और मेरा क्वेश्चन ये है, देखो
Draw the graph between horizontal component of velocity with time and vertical component of velocity with respect to time in projectile thrown at angle theta, है ना? Thrown at angle theta with a horizontal. Thrown at angle theta with horizontal. तो वर्टिकल कंपोनेंट डिक्रीज होता चला जाएगा. ऑलरेडी वी हैव डन इट इन वन डायमेंशन मोशन. सेम ग्राफ विल बी वैलिड हियर. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट टाइम के साथ is going to be constant because no acceleration in horizontal direction. तो ये ऑलरेडी ड्रॉ किया था वन डायमेंशन मोशन में. ऐसा कुछ था, डू यू रिमेम्बर? ऐसा कुछ आया था, या ऑब्जेक्ट जब ऊपर जाता तो इनिशियल वेलोसिटी इज मोर, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचते पहुंचते वेलोसिटी जीरो हो जाती है. ये वेलोसिटी है, ये टाइम है. तो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा जब उसका डायरेक्शन चेंज होगी तो ये आगे जाएगा, ऐसा नेगेटिव वेलोसिटी हो जाएगी. तो दैट इज व्हाट इज सेम. ये देखो यहाँ पर है, पहले कौन सा था, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल. पहले वर्टिकल कंपोनेंट है तो इसको हम यहाँ पहले दिखाते हैं इधर. हॉरिजॉन्टल बाद में है तो इसको बाद में दिखाते हैं. क्लियर? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट्स? वर्टिकल कंपोनेंट डिक्रीज हो रहा है, पहले मैक्सिमम है, फिर जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो गया, फिर डायरेक्शन चेंज होगी, वर्टिकल कंपोनेंट फिर से बढ़ेगा, वेलोसिटी फिर से बढ़ेगी वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ऐसे आएगा. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जितना बिगिनिंग में था t इज इक्वल टू 0 पर, उतना ही लास्ट तक रहने वाला है, till body comes back to, till object comes back to its initial point. ठीक है, तो these can be useful questions. ये आपको अपने खुद सोच के करने हैं, बुक्स में may not be given to our textbook. Convinced? अगर बोलेंगे वर्टिकल कंपोनेंट आप स्पीड कर दें अगर, तब कैसा होगा? यहाँ पर ऐसे जाके स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, तो यहाँ से टर्न हो जाएगा फिर. So these are important for competition point of view. Both questions, both part. तो होमवर्क नहीं है, ये क्लास वर्क हो गया. Clear to everyone? Yes, sir. All Yes, sir. right. Now, okay. ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है. अभी हमने वेक्टर फिनिश भी किए, कंपोनेंट भी पढ़ा है, तो थोड़ा सा लॉजिक लगाइए और देखिए. एक मिनट, इसका आंसर क्या आ सकता है? चेक पॉइंट फॉर योर वेक्टर एंड प्रोजेक्टाइल का कॉम्बिनेशन है. तो नोट डाउन वेदर वो हाईएस्ट पॉइंट को क्रॉस कर चुका है कि नहीं. इट इज क्रॉस द हाईएस्ट पॉइंट और स्टिल ऑन द वे टू हाईएस्ट पॉइंट. ऐसे जाएगा कुछ ऐसे एंगल पे. वेदर इट इज somewhere here or somewhere here. So this you have to check. It is in homework. Just note down. Done.
Okay, so some more points we'll see. This is also good question. देखो ये भी अच्छा question है. Already इसमें many points I have covered. है ना? देखो, fly ball is hit to the outfield. The ball is normal. This uh, during its flight, ignore the effect of air. What happens to its horizontal component? Already done, है ना? Vertical component already discussed. What are the horizontal and vertical components of acceleration during the ascent, during the descent, and at the topmost point? So already done these points. All the points are done, but you have to just put it in the words properly. उसको लिखिए, सारे points के आंसर लिख के भेजिए, है ना? So that projectile will be more clear to you. अभी हम लोग projectile start करने वाले हैं, so these points should be known to you. मतलब उसके जो equations हैं, we are going to deal with the equations now. These points should be very, very clear. Note down this question also for homework. Done? जो acceleration है, that comes from the force, है ना? और gravity का force is always vertically downward. It is under the effect of gravity, independent of direction of motion. Gravitational acceleration and gravitational force both are vertically downward toward the center of the earth, always along the radius of the earth toward the center of the earth, irrespective of the motion of the freely moving body. Project कर दिया, फिर air में है, I mean it is under the effect of gravity. Acceleration will have its constant value, constant direction, no change in the direction. वन डायमेंशन मोशन में भी किए थे ये पॉइंट्स हमने एक्सेलेरेशन के, तो सेम आर वैलिड हियर आल्सो. ओके, तो थोड़ा सा टाइम है, बट वी कैन डू इट. देखो ये इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, यहाँ को रिकॉर्ड टाइम ऐसे गया एंड इट कम्स हियर. तो ये टेक्स्ट बुक का डायग्राम है, यू कैन कीप इट सिंपल. ओनली यहाँ पे बना सकते हैं, ये सब छोड़ दीजिए, ये सब छोड़ सकते हैं, सिंपल. तो लेट्स सी, लेट आफ्टर टाइम टी प्रोजेक्टाइल इज एट पॉइंट पी. ये वाला पॉइंट पी ले रहे हैं हम यहाँ पर. तो दिस वी कैन हाइड. इसको थोड़ा सा सिंपल कर देते हैं. जस्ट लेट मी हाइड सम पॉइंट्स. दिस इज नॉट रिक्वायर्ड नाउ. पॉइंट पी वाज रिक्वायर्ड. पी को लिख लेते हैं, यहाँ पर है पॉइंट पी. पॉइंट पी का एक्स कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट्स आर एक्स एंड वाई. यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स एंड वाई. शैल आई राइट हियर? ठीक है. ऑल अदर पॉइंट्स मे नॉट बी रिक्वायर्ड. ये भी सब हटा देते हैं. जस्ट ओके, ठीक है. तो लेट्स सी फर्दर. लेट आफ्टर टाइम टी, यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम टी लगा उसको. इट इज एट पॉइंट पी हैविंग कोऑर्डिनेट्स एक्स एंड वाई अलोंग एक्स एक्सिस. इस तरफ देखेंगे तो यूजिंग एक्स इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यू एक्स हो जाएगा
यहाँ पर ax हो जाएगा, x डायरेक्शन में हम बात कर रहे हैं, तो ये इनिशियल वेलोसिटी x एक्सिस की तरफ और एक्सेलेरेशन अलोंग द x एक्सिस, तो ux इज हाउ मच, ओके ux इनटू t लिखा, एक्सेलेरेशन ax इज 0, ax इज 0, यहाँ पे अभी हम लिख सकते हैं, और ay जो है माइनस g होता है, ठीक है, तो 0, ये पूरा टर्म 0 हो गया, तो वी आर लेफ्ट विद ux इनटू t, एंड ux इज हाउ मच, अभी हमने पीछे लिखा था, ux is given by u cos theta, already we written in the previous introduction, तो ux is u cos theta, यहाँ पे चाहे तो लिख सकते हो ux is u cos theta, ठीक है, तो ये हो गया u cos theta, तो यहाँ से t मिल गया हमें, t की वैल्यू मिल गई which is x upon u cos theta, we got the value of t from the x axis motion along the x axis, now we are considering the motion along the y axis, y axis में, okay there is some issue, screen has gone, just a minute, just a minute, let me bring back, all right, तो y axis में देखिए, y axis की तरफ इक्वेशन ऑफ मोशन विद वन डायमेंशन मोशन, y s is equal to ut plus half at स्क्वायर को हम लिखेंगे y is equal to uy into t, the scalar quantity valid for both the equations, same ay into t square, तो uy will be ये वाला डायरेक्शन u sin theta होता है, uy is u sin theta, हमने प्रीवियस टॉपिक अभी हमने डिस्कस किया था, वर्टिकल कंपोनेंट, और टाइम की वैल्यू ये वाली यहाँ पुट कर दी, इसमें भी और यहाँ पर भी, और हाफ इज एज इट इज हाफ, ay इज हाउ मच माइनस g, डाउनवर्ड डायरेक्शन माइनस ले रहे हैं, तो ये माइनस g एंड हाफ एज इट इज, और t की वैल्यू ये भी, ये वाली t की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, बस सिंप्लीफाइड एंड दैट इज द इक्वेशन, ये इक्वेशन है अपनी, इसको ऐसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लिया, यू गेटिंग कैंसल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज टेन थीटा इंटू एक्स माइनस जी हाफ भी है, और ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये यू स्क्वायर का स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये कांस्टेंट है ये वाले, और ये भी कांस्टेंट है, इनिशियल एंगल जो थीटा है वो भी कांस्टेंट है, थीटा यहाँ पे लिखना है, ठीक है, तो दिस इक्वेशन इज, यहाँ पे देखो y की सिंगल पावर है, x की भी सिंगल पावर है, यहाँ पे x की पावर 2 भी है, तो सच इक्वेशंस आर कॉल्ड पैराबोलिक इक्वेशंस, पैराबोलिक पाथ means this general equation of parabola is this, y is equal to ax plus b x square, a and b are constant, it can be negative constant also, so it is matching with this, so this is the equation of parabola, sometimes you are required to prove this, आपको इक्वेशन आती है प्रूव करने के लिए, प्रूव दैट पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक पाथ, तो पहले आपने क्या किया, एक्स एक्सिस में इक्वेशन लिखी, इक्वेशन ऑफ मोशन को टाइम निकाल लिया उससे, फिर वाई एक्सिस के अलोंग लिखी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, और टाइम की वैल्यू पुट कर दी, और कंपोनेंट इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी विल बी, ये कौन सा कंपोनेंट होगा, यू वाई विल बी यू साइन थीटा, ठीक है, तो यू साइन थीटा लिखा, टी की वैल्यू भी पुट कर दी, तो दिस इक्वेशन इज रिप्रेजेंटिंग द पैराबोलिक पाथ, ठीक है, ऑफ प्रोजेक्टाइल, so this is first part, one thing, next class Monday we will be doing, tomorrow I am not keeping the class because I have to relax because आँख में problem है थोड़ी, so no class tomorrow, no extra class tomorrow, next Saturday we can take, Okay, sir. that's all, Yes, sir. you can just, if you miss any point you can ask, otherwise I will just